The first part of the video has been uploaded. This is the second part. The link to the first part is given in description. I'll make a cross section for you of this place. Okay, and we have some sort of this sort of cross section. Western Island, and this one I'll make a little bit here. This sort. Okay, this one is the Milan zone. It is one of the famous Milan zone, Andes Milan zone. आपने नाम सुना होगा. That is the Andes Milan zone. And why we call it Milan zone? We call it Milan zone because the Indian rocks and the Tethyan rocks, they are absolutely mixed here, right? Sometimes you are unable to differentiate between the Indian plate and Indian plate rocks and the Tethyan जो ओशियानिक क्रस्ट है उसमें आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते. ठीक है, तो इस मिलान जोन में हमारे पास जो है वो जो बेसाल्ट है, राइट, इट चेंज टू द ग्रीन शेस्ट. ठीक है, अल्ट्रामेफिक जो है वो भी ऑलमोस्ट अल्ट्रामेफिक जो है वो भी ग्रीन शेस्ट में चेंज हो गए. हमारे पास जो गेब्रोइक रॉक्स थे यहाँ पे वो भी मेटामॉर्फोज हो गए हैं. और इसके साथ साथ जो इंडियन प्लेट के रॉक्स है वो तो ऑलमोस्ट वो तो मेटामॉर्फोज ही है. सो द इंडियन प्लेट rocks are also metamorphosed. So everything over here are metamorphosed, right? So what happened when the subduction take place and the continent collision take place? ये जो collision front है जिसमें हमारे पास accretionary prism और उसके साथ साथ जो abducted oceanic crust है वो mixed हो जाते हैं. That's why it's called a Milan zone. ठीक है, chromium is already was already present within the oceanic crust rock, right? There was no chromium in the Indian plate rocks. ये जो Indian plate rocks में आप ये जो sequence देख रहे हैं, ठीक है, that is the Alpurai group metasediments, right? And you know about the Alpurai group metasediment. And the Alpurai group metasediments, we have Mangalore formation, right? Then Marghazar formation, followed by Kashala formation, Nikanaygar formation, and Sidhu formation. और उसके जो intrusive rocks है, that were the granitic gneisses. ठीक है, इस granitic gneisses के साथ साथ यहाँ पे हमने स्वाट टूरमलीन ग्रेनाइट को भी देखा है. स्वाट टूरमलीन ग्रेनाइट. सो वी हैव सीन स्वाट टूरमलीन ग्रेनाइट. और वो हमने कहाँ पे देखा? कड़ाकड़ पास में देखा. ठीक है, which is exclusively consists of feldspar and plus a little bit silica and plus tourmaline. ठीक है, अब ये जो चीज़ें हैं जो constituents है, they are important for the formation of emerald. ठीक है, so they are formation emerald formation. And you know about the formula of the emerald is Be3Al2SiO3 and 6, right? Where there is no water in it. प्लस यहाँ पे इसमें ट्रेसेस में क्रोमियम और वेनेडियम भी है. तो अगर आप इस जोन को देखें, सो वी हैव क्रोमियम दैट आर प्रोवाइडेड बाय द Tethyan rocks, राइट? और हमारे पास जो यहाँ पे जिस चीज़ की कमी थी वो थी बेरिलियम. ठीक है, अब बेरिलियम कहाँ से आ गया? बेरिलियम हैज़ बीन रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड इन दिस जोन. ठीक है, तो अगर आप इस एमरेल्ड के उसको देखें, जो इसका जो फार्मूला है, जो कंपोजिशन है, सो वी हैव एल्यूमिना, सिलिका, ऑक्सीजन एंड एवरीथिंग. सो दैट्स द क्लासिकल पॉइंट और द क्लासिकल प्लेस वेयर एमरेल्ड ग्रो. ठीक है, अब एमरेल्ड ग्रोथ के लिए
आपको सॉफ्ट रॉक्स चाहिए. देयर मस्ट बी सम सॉफ्ट रॉक्स बिकॉज विदाउट सम सॉफ्ट रॉक्स या आपके पास अगर वेन्स है तो आप उसमें क्रिस्टल ग्रो नहीं कर सकते. इफ़ यू कैन नॉट ग्रो क्रिस्टल सो एमराल्ड इज यूजलेस. ठीक है, या अगर आप इस एमराल्ड से आप क्रोमियम को हटाए या वेनेडियम को हटाए, ठीक है, तो ये एक्वामेरीन बन जाता है या बैरल बन जाता है. ठीक है, अब देयर इज अ हेल ऑफ डिफरेंस इन द प्राइस ऑफ एमराल्ड एंड एक्वामेरीन. ठीक है, तो ये जो प्लेस है आप जो देख रहे हैं यहाँ पे एक्टिवली माइनिंग हो रहा है उसका एमराल्ड का, एंड दिस इज़ वन ऑफ द फेमस एमराल्ड. ठीक है, तो इसमें बात जो है 24 कैरेट के एमराल्ड जो है उसका प्राइस जो है अराउंड 30 लाख और 25 और 26 लाख भी है. अब ये जो नीचे रॉक्स हैं, क्योंकि यहाँ पे सबडक्शन जोन है, एक्टिव सबडक्शन जोन है, तो ये जो फॉर्मेशन है दिस इज सिद्धू फॉर्मेशन. ठीक है, सिद्धू के नीचे फिर कशाला फॉर्मेशन है और कशाला फॉर्मेशन के नीचे मरगज़ार है और यहाँ पे मंगलावर फॉर्मेशन है. तो पूरा जो इंडियन प्लेट के रॉक्स है दे सबडक्ट बीनीथ दिस मेलान जोन. अब ये एक्चुअली दिस मेलान जोन अगर हम उसको वेस्ट की तरफ एक्सटेंड करें तो वहाँ पे इसको हम कहते हैं ऑफियोलाइट्स. ठीक है, क्योंकि वहाँ पे इतना मैक्सिंग नहीं हुआ है. वहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस इज अल्ट्रामेफिक रॉक्स, राइट, इट्स फॉलोड बाय गिब्रोइक रॉक जो मैंने आपको पढ़ाए हैं, जो लेयर है ऑफियोलाइट के. फिर उसके बाद शीटेड डाइक्स है और डाइक्स के बाद फिर फेलो बेसाल्ट है, उसके ऊपर रेडोलेरियन पेलेजिक सेडिमेंट्स है. ठीक है, तो यहाँ पे इस जोन में हमारे पास ये चीज़ नहीं मिलती है. वाई? बिकॉज ऑफ मल्टीपल मेटामॉर्फिज्म, बिकॉज ऑफ मल्टीपल ऑफ मिक्सिंग. आप चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं. ठीक है, वो कर रहे हैं, इसको ग्राइंड कर रहे हैं सब चीज़ों को. तो दैट्स व्हाई सब आपको मुख्तलिफ चीज़ों के ब्लॉक्स भी मिलेंगे. इसके अलावा यहाँ पे आपको सरपेंटीन मिलेगा. आप यू नो अबाउट द सरपेंटीन, सरपेंटीन किस तरह बनता है, और आपका टैल्क मिलेगा. ठीक है, टैल्क में जो है देयर इज़ अ ज़ीरो टॉलरेंस. ठीक है, अगर उसमें एक भी एस्बेस्टास का कोई भी क्रिस्टल चला गया तो वो जो है वो टैल्क रिजेक्ट होता है जितना भी आपके पास हो. ठीक है, तो इस रिजेक्शन की वजह से यहाँ पे जो है जो लोग हैं दे टेक केयर. और दूसरा ये है कि टैल्क में वाइट कलर को देखा जाता है. तो जो टैल्क मेटासोमेटिज्म से बनता है, फॉर एग्जांपल आपके पास डोलोमाइट है और उससे आप टैल्क बनाते हैं, ठीक है, तो वो ज़्यादा अपीलिंग है बिकॉज इट्स कलर इज़ मोर क्लियर. ठीक है, और उसमें जो कंटेमिनेशन है एक्टिनोलाइट का या जो वो है ट्रेमोलाइट का, वो बहुत कम होता है. This area is basically belonging to the Mangora ophiuretic melan, and this is representing the area where the Indian plate has collided with the Pakistan iron ore. Because of that intense collision, the rocks of oceanic lithosphere as well as the Indian plate rocks, which are metasediments, they were jumbled together. And the ophiuretic sequence, because of that instant tectonic activity, the ophiuretic sequence was also dismembered. It was broken into pieces, right? And that is why we call it melange. Melange is basically a chaotic mixture of igneous rocks and the sedimentary rocks or the metasedimentary rocks, which are derived from the ophiuretic units, and they are formed when there is intense tectonic activity or collisional activities, right? So this is marking the collisional boundary. If we go towards the east side, we can encounter another ophiuretic melange, जहाँ पे आपको ocean lithosphere का uppermost portion, इसको क्या कहते हैं? Ultramafic rocks. Further moving towards the west, we encounter another ophiuretic zone, which is called the Dargais Khakut ophiuretic melange. Right? Northwest में बाजोड़, नवागई बाजोड़ ophiuretic melange encounter होता है. ठीक है? Similarly, the Prangar ophiuretic melange is again in Moman agency, and then that collisional boundary, which is known as Indus suture zone. What is the name of this collision? The collisional boundary between the KA and the Indian plate is called Indus suture zone.
within this Mingora Aphyritic melange, we have one of the best emerald deposits of the world. Their deep green color and their transparency and their relatively unfractured nature make these gemstones one of the most appealing gems of the world. Now, the reason for its green coloration, there could be two possibilities. It could be because of the chromium, or it could be because of the vanadium or manganese and or iron. Rafiq and John, 1985, they have analyzed these gems, these emeralds, and they have found that chromium is basically the cause of the coloration to the gem. So it's chromium is the major reason for the coloration of this gemstone. What are the hosts for these rocks? These gemstones, these emeralds, are hosted within the carbonate rocks. And they can be named as talc carbonate schist, talc magnesite schist, and there could be talc quartz schist. This is basically that talcose rock, which is talc magnesite schist. You can see that this white coloration is reflective of the fact that it has abundance of talc. What are the protoliths for these talc carbonate rocks? They were actually ultramafic rocks. So the chromium and the emerald came from this ultramafic rock. So we know that ultramafic rocks के अंदर chromite के deposits भी होते हैं. तो इन्हीं sequence के अंदर at different places, particularly at Dargai region, at Momand region, at Bajor region, at Shangla region, we have economical grade chromite deposits. And the chromite deposits are basically magmatic deposits. They have primary mineralization. Got my point? So this ophiutic sequence is having primary mineralization in the form of chromite mineralization, which are again hosted in peritotites and these denites. So these talc carbonate rocks, these magnesite rich rocks, are the result of the alteration of those ultramafic rocks. Okay? So the emerald mineralization took place when, due to collision, the chromium was reactivated from these ultramafic rocks, and beryllium was either derived from the post-collisional magmatism. Like it might have been derived from the Malaccan granites, it might have been derived from the ignimbrite rocks in the Peshawar basin, which are again 27 million years old, and it could be some hidden magmatic activity, or it could have some other source, because ये जो emerald mineralization है, it has been reported from Bajor, Nawagay Aphyritic Complex. It has been reported as well from Bucha area, Plangar Aphyritic Complex, and the same emerald mineralization has taken place in Charbagh region. अब यहाँ पे तो ये Malaccan granites के नज़दीक है. But what about the Charbagh, which are several kilometers away from here, and the same could be applied to the Bucha and the Bajor region. So it could be, and there could be some other alternative, that because of that collision between the Indian plate and the KA, the Indian plate is getting subducted slowly. So because of that subduction activity, there could be some hydrothermal mineralization. There could be the formation of some hydrothermal mineralization. In these hydrothermal mineralization containing beryllium, okay, provided the beryllium source to form the emerald mineralization. Okay, so that's actually the summary of the host rocks there and the mineralization in the area.
member of the alkali group meta sediments of Triassic age, which are exposed in Swat region. This one is the top part of the alkali group meta sediments, the Sidhu formation, right? So Sidhu formation is mostly graphitic, and as you know that it's not a monotonous body where you have only graphite. You might have some phyllites in it. Okay? So we have garnet, mica schist, and we have graphite. So mostly it consists of graphite. Okay? और इसमें आप देख रहे हैं, you can see that tectonic fabric. तो अगर आप यहाँ पे देखें, it's typical in this direction, और वहाँ पे आपने मेलान जोन देखा जो कि abduct हुआ इस डायरेक्शन में, ठीक है? तो ये इंडियन प्लेट के रॉक्स along the subduction नीचे जा रहे हैं, ठीक है? जब हम आगे जाएंगे तो इसके नीचे कौन सा फॉर्मेशन आएगा कि जो इसके नीचे जा रहा है इसी तरह? Which formation will come? Kashala formation, ठीक है? And then Marghozar, and then Mangalore, and then the Swat Field Work, ये सारे इसके नीचे जा रहे हैं. वहाँ पे मेलांज थ्रस्ट हुआ है, ठीक है? या जो ओफ्यूलाइट है या जो थेटिस ओशन के जो फ्लोर है वो थ्रस्ट हुआ है ओवर द इंडियन प्लेट रॉक. सो दिस इज द नदर्न मोस्ट मार्जिन ऑफ द इंडियन प्लेट रॉक्स, ठीक है? ये जो आप देख रहे हैं दैट इज फोलिएशन, ठीक है? इसको हम जब इसका वो शुरू करते हैं हम इसको S2 फोलिएशन कहते हैं, क्योंकि अभी आपको कुछ पता नहीं चला. इसका जो ओरिजिनल बिल्डिंग है वो डिस्टर्ब हो गया फॉर श्योर, और हम ये देख रहे हैं. सो दैट इज एन S2 फोलिएशन, ठीक है? जब आप इसको माइक्रो के ऊपर लेके जाते हैं तो दैट कुड बी S6 फोलिएशन, दैट कुड बी S3, या इट कुड बी S4 फोलिएशन. अभी जो यहाँ से जब आप स्टार्ट लेंगे, सो फ्रॉम हियर यू विल सी दी यू विल गिव द नेम S2 फोलिएशन, ठीक है? यहाँ पे आपको एक क्वार्ट्ज वेन नजर आ रहा है. These are the recent hydrothermal activities in this region, and that is why कि ये जो हम कह रहे हैं कि बेरिलियम और जो एमरिनाइजेशन के लिए है, तो यहाँ पे हाइड्रोथर्मल एक्टिविटीज है. सो वी टेक इट एज अ क्लू दैट दिस स्मॉल हाइड्रोथर्मल सॉल्यूशन माइट प्रोवाइड बेरिलियम फॉर द मिनरलाइजेशन ऑफ एमरिन, ठीक है? तो अगर आप देखें, इसने अगर आप इसको देखें तो इसने इस टेक्टोनिक फैब्रिक को, दैट्स अ टेक्टोनिक फैब्रिक या टेक्टोनिक ग्रेन को इसने बिल्कुल क्रश कर किया है. So which one is older and which one is younger? This one is younger. This one is very younger, ठीक है? क्योंकि इसने हर चीज को कट किया है, ठीक है? You can see here. अगर आप करीब से देखें ये वाले, ये this one, इसको हम intersection lineation कहते हैं. These are all the intersection lineation, ठीक है? But don't worry about it, intersection lineation, क्योंकि इसको इसके जो क्लीवेज है इसको किसी और क्लीवेज ने वो किया है और प्रिंट किया है. This is why you see some lineation है, ठीक है? अगर आप करीब से देखें, ये देखो ये वाले ये जो स्पॉट्स है, these are garnets, ठीक है? एल्मंडीन गार्नेट है. एल्मंडीन गार्नेट में आयरन होता है, वो बहुत इजीली वेदर्ड हो जाता है. सो दैट्स एल्मंडेनिक गार्नेट, इसमें बहुत ज्यादा वो है, ठीक है? समझ आ गए? Yes, sir. ये जो पर्टिकुलर फॉर्मेशन है ये कशाला फॉर्मेशन का है, ठीक है? सो फार दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम वी सी कशाला फॉर्मेशन. कशाला फॉर्मेशन कंसिस्ट ऑफ कैलकेरियस गार्नेट माइका शिस्ट, ठीक है? आप इसमें गार्नेट्स को देख रहे हैं, ठीक है? यू कैन सी द गार्नेट्स हियर. दीज आर द गार्नेट फोरोब्लास्ट, ठीक है? और जो शाइन कर रहा है दिस इज ऑल मस्कोवाइट. सो यू कैन सी हियर दिस आउटक्रॉप, सी दिस वन, दीज आर ऑल गार्नेट्स, नाइसली डेवलप्ड गार्नेट्स. ये मीडियम एम्फीबोलाइट फिशेज मेटामॉर्फिज्म कंडीशन शो करते हैं, ठीक है? अराउंड रफली अराउंड 4 to 5 किलोबार प्रेशर, और टेम्परेचर जो है दैट इज 500 and 600 सेल्सियस टेम्परेचर पे ये जो रॉक्स है ये मेटामॉर्फोज हो चुके हैं, ठीक है? ये उसका जो अपर पार्ट है दैट इज लाइमस्टोन मार्बल और डोलोमेटिक अपर पार्ट है कशाला फॉर्मेशन का, ठीक है? सो कशाला फॉर्मेशन जो है हमारे पास उसमें पिलाइट्स भी है. मार्बल में आपके पास सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट होता है, तो वो रिक्रिस्टलाइज होके मार्बल बन गया है, ठीक है? और उसमें अगर डोलोमाइट है तो फिर हम उसको कहते हैं डोलोमेटाइज मार्बल, ठीक है? तो ये इसका कंपोजिशन. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यू कैन सी दिस S type folds, right? You can see these are S type folds. और इस S type fold से मार्कर है किसी के पास, ठीक है? तो फिर के सबडक्शन जोन इसी तरह है, इंडियन प्लेट के नीचे ये सारे रॉक नीचे इस तरह जा रहा है, और साथ साथ
ये शेयर भी कर रहा है, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि ये रॉक बहुत डीप गए हैं along the subduction zone, आगे कोहिस्तान आइलैंड आर्क है, ये पूरा सीक्वेंस नीचे जा रहा है। तो ये रॉक इस तरह जा रहा है और इसी तरह जाने के साथ साथ ये इस तरह शेयर भी कर रहा है, ठीक है। सो यू कैन सी दैट शेयर बैंड इन इट, दैट इज द शेयर डायरेक्शन। ये जो फोल्ड डेवलप हो गए हैं, ये एस टाइप फोल्ड जो कि वेरी फोटोजेनिक है, यू कैन टेक अ फोटो ऑफ दिस वन। दिस इज बिकॉज ऑफ द इंडियन प्लेट सबडक्शन लाइक दिस, ठीक है। नॉर्थ की तरफ सबडक्ट कर रहा है और साथ साथ वेस्ट की तरफ टॉप, इसको कहते हैं टॉप टू द वेस्ट, ठीक है। टॉप टू द वेस्ट, टॉप टू द वेस्ट ये शेयर भी कर रहा है इसी तरह। Blue schist is termed the Shangla blue schist, and it's exposed within the Khoistan fault and the Swat Field Work. इसके ऊपर डेटिंग हो गई है, इसको कहते हैं आर्गन 39 एंड आर्गन 40 डेटिंग इसके ऊपर हुई है, और वो है 80 मिलियन ईयर, कहते हैं MA, ठीक है। एंड देयर इज वेरी गुड लॉजिक इन इट, वेरी नाइस लॉजिक इन इट, बिकॉज वी हैव डन dating in Indian plate. And the dates are 39 and 22 mm, okay, but there is no 32 and 28 mm date, right? So what could be the reason? इसका मतलब ये था कि ये rock already abducted थे, they were not under the surface at 39 and 28 mm. अगर ये सिचुएशन होता तो ये भी मेटामॉर्फोज होता, ठीक है। इसमें ये एम्परेट होते, मगर ये कि इसने इसको नोट नहीं किया। तो अगर हम इनिशियली इसको लेके जाएं, सबडक्शन जोन डेवलप है इन द 30th ओशन, ठीक है, और यहाँ पे कोहिस्तान आइलैंड आर्क बन गया, ठीक है। अब कोहिस्तान आइलैंड आर्क ने क्या करना था कि इसने अबडक्ट करना था, ठीक है। सो व्हेन इट स्टार्ट अबडक्टिंग, तो क्या हुआ कि यहाँ पे कोहिस्तान आइलैंड आर्क के ये पार्ट जो है, इस पार्ट के साथ ये मेलांज, ये जो ब्लू शिस्ट है ये एक्रीटेड हो गया, ठीक है। तो एक्रीशन इज टेकिंग टुक प्लेस विद द कोहिस्तान, दैट इज कोहिस्तान, ठीक है। और विद दिस एक्रीशन ये जो है विद द टाइम ये ऊपर आ गया, और बाद में क्या हुआ कि जब सबडक्शन जोन कंटिन्यूस था तो व्हाट हैपेंस कि हमारे पास ये पूरा कंज्यूम हो गया और इंडियन प्लेट आके कोहिस्तान आइलैंड आर्क के साथ इसका पूरा, तो दैट्स नो कोहिस्तान आइलैंड आर्क इंडियन प्लेट, और दरमियान में ये जो पार्ट है इसमें ब्लू शिस्ट है। इसका जो कंपोजिशन है, जो व्हाई वी कॉल इट ब्लू शिस्ट, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ ग्लाइकोफेन, राइट, एंड ग्लाइकोफेन इज सोडियम, मैग्नीशियम, alumina 2, Si8, O22 और OH. Blue schist, and there are some green schist rocks as well associated with this blue schist. These rocks belongs to Shangla ophiuritic melange. This rock represent the basaltic portion of the ophiuritic sequence which was metamorphosed to blue schist fish. Right? Okay? So if you draw the diagram, यहाँ से 0 and you put the temperature on this side and you put the pressure on this side. So if it's 8 kilobar, then 12 kilobar up. So you expect the green schist fishy here, expect green schist fishy in this zone. ठीक है जनाब, जो low temperature, low pressure या medium to low temperature, low pressure, जो ही pressure बढ़ता है तो the green schist fishy is going to change and glaucophane start forming. लिहाजा यही rock they are going to somewhere they will be going to develop the blue schist. And if the temperature, if the pressure further goes up, so then again in this areas what we have, alkali fish, जो सबसे high pressure rocks है, ठीक है जनाब। And going to that area, if we increase the temperature but not the pressure, if we increase the temperature but not the pressure, then the granulite fishy rocks are going to develop. Granulite. So granulite fishy represent high temperature. The eclogite and blue schist fishy represent high pressure subduction settings.
and the greenish fleshy represent low to medium pressure, low to medium temperature. So that's actually the scenario. Is to show you some asymmetric folds, right? Some are symmetric where you can see one limb or another limb and you can see the hinge line, but this one is asymmetric. This is a nicely developed S fold, and how you can measure the shear from this one. So this is the short limb and this one is the long limb, right? So from the short limb you can rotate your hand towards the long limb, right? So it means the shearing is taking place in this direction. कशाला में ये asymmetric fold है. अब अगर यहाँ से हम अगर आप देखें, so this is top to west again. So ये जो shear sense है this top to west, इसका मतलब ये है Indian plate is going in the north direction और साथ साथ ये counter clockwise भी rotate हो रहा है west की तरफ. So this is why these fabrics are developed because of the counter clockwise rotation of the Indian plate. ये continuous vein था और इस vein को because of the flow of the mica, right, into this next zone and the flow of the mica into this next zone, इसने इसको काटा. यहाँ पे भी quartz था मगर वो remove हो गया. यहाँ पे भी quartz है. This is called budinaj, right? और इसको pinch and swell structure भी कहते हैं. ठीक है.